Let us see the next question. The cash flows of the project C and project D are reproduced below. For C project and for D project, here are the cash flows. डायरेक्टली हमको एनपीवी दे रखा है 10%, हमको कैलकुलेट नहीं करना है. डायरेक्टली हमको आईआरआर दे रखा है दोनों कैश फ्लो सीरीज का. पहला क्वेश्चन ये है दैट व्हाई देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग. दूसरा क्वेश्चन ये है व्हाई शुड यू रिकमेंड द प्रोजेक्ट सी इन स्पाइट ऑफ द लोअर आईआरआर. और हमको डिस्काउंटिंग फैक्टर्स दे रखा है 10, 14, 15, 30 and 40. This is what the way the information is given. I want all of you to go through the question and explain me the first question. मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे सबसे पहले आपको ये I want you to tell me कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है. तो फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, वी कैन सी दैट कि अगर मैं एनपीवी क्राइटेरिया को बेस ले रहा हूं डिसीजन मेकिंग के लिए, तो हमको पता है कि जो प्रोजेक्ट का हायर पॉजिटिव एनपीवी उसको सिलेक्ट करना चाहिए. यानी क्या होगा, प्रोजेक्ट सी में इन्वेस्टमेंट करेंगे. और अगर मैं आईआरआर को बेस लेता हूं तो क्या होगा, जिसका आईआरआर ज्यादा है एंड इट इज एक्सीडिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे. तो देखो दोनों में से किसका आईआरआर ज्यादा है, डी का आईआरआर ज्यादा है. Now we can see that's over here, that's the cost of capital is 10%. तो if at all we take the base of the IRR, तो project D में investment करना चाहिए, ऐसा हम लोग समझते हैं. So using NPV as a base, project C should be selected. Using IRR as a base, project D should be selected. ऐसा करके दोनों decision making criteria एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहा है. ये क्या है, ये conflict है in the ranking of the proposals. और हमको ये पूछा है क्वेश्चन में कि क्यों ऐसा कॉन्फ्लिक्ट. तो सबसे पहले एज अ स्टूडेंट आपको ये समझना पड़ेगा दैट से ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है, और फिर आपको ये आंसर देने का है कि ऐसा कॉन्फ्लिक्ट क्यों है. सो प्लीज राइट डाउन आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन लिखवाता हूं. राइट डाउन आंसर. Explanation of question. उसमें आप लोग लिखिए फर्स्ट पॉइंट. Over here, if we select project based on NPV criteria, comma, then project C will be selected. Full stop. It has higher positive NPV. Full stop. In case of IRR, we understand that we should select project D because its IRR is more than IRR of project C and
it is more than even cost of capital. %10. Second point, we have to identify the reason that why there is a conflict in ranking of proposal. Full stop. ऐसा हमको यहाँ पे आंसर देने का है. Now tell me that say why there is a conflict. We have understood the question. अभी मुझे ये आपसे जानना है कि ऐसा conflict क्यों है. The friends यहाँ पे आंसर ऐसा है that say ऐसा conflict pattern of the cash flow series की वजह से. What is the reason? The reason is the pattern of cash flow series. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट सी में क्या होता है, इनिशियली कैश अप्रूवल कम है, फिर बहुत ज्यादा है. प्रोजेक्ट डी में क्या है, इनिशियली कैश अप्रूवल बहुत ज्यादा है और बाद में क्या हो जाता है, बाद में ये कम हो जाता है. We know that so the IRR criteria is making a wrong assumption that the internal cash accruals can be reinvested at IRR rate. तो बेसिकली क्या होगा, बेसिकली ऐसा होता है कि IRR क्राइटेरिया ऐसा अज्यूम करता है कि प्रोजेक्ट डी में जो पहले साल में हमको ह्यूज कैश अक्रूवल मिलेगा उसको हम लोग बहुत हाई रेट से रीइन्वेस्ट करेंगे. इसलिए क्या होता है कि प्रोजेक्ट डी का IRR प्रोजेक्ट सी से ज्यादा है. It is because of so the difference in the pattern of the cash flow series ऐसा conflict in the ranking आता है. सेकेंड क्वेश्चन में देखो हमको क्वेश्चन में आंसर दे रखा है. Why should you recommend the project C in spite of the lower IRR? प्रोजेक्ट सी में आप इन्वेस्टमेंट करने का क्यों सजेस्ट करोगे इवन दो उसका IRR कम है. भाई सिंपल है ना, क्योंकि उसका एनपीवी ज्यादा है. We know that so the IRR is suffering from the great limitation of making assumption of the reinvestment of the internal cash accruals at IRR rate. That is the reason so we are going to take the decision based on the NPV criteria and not based on the IRR criteria. तो फ्रेंड्स एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आंसर से शुरू करना है, ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको नहीं लिखना है. सो राइट डाउन आंसर फॉर द क्वेश्चन. There is a conflict of ranking because there is a difference of pattern of cash flow series. Full stop. उसी में लिखो. We understand that project D has high internal cash accruals initially. So
IRR criteria wrongly assumes that internal cash accruals can be reinvested at the rate IRR, comma, so project D has higher IRR. With paragraph write down, project C has lower cash accruals initially and higher cash accruals later on. Full stop. अभी सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, whenever there is a conflict in ranking a proposal, comma, the company should select a project with higher positive NPV, comma, even though its IRR is less. Full stop. उसी में आगे लिखते हैं, it is because of limitation of IRR with respect to reinvestment rate. Full stop. IRR criteria wrongly assumes that internal cash accruals can be reinvested at the rate IRR, full stop. Further, for one company at one point of time, assuming that it has different reinvestment rate, is wrong.
फुल स्टॉप।